हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट M-CDK। इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्सो एज माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर और मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। So, it is synthesized during the S and G2 phase, and it induces a variety of functions by phosphorylating a series of different proteins. This include the condensation of the chromosome, then the breakdown of the nuclear envelope, and then the assembly of the mitotic spindle apparatus, and the last one, which is the alignment of the condensed chromosome at the metaphase plate, which is a important characteristics of metaphase, right? So now we will also going to talk about metaphase, anaphase, prophase in details in upcoming video. But our today's concern is how M-CDK facilitates this type of things. I have already told you that they performs variety of phosphorylation reaction to accomplish that four task. So the first protein that is phosphorylated by M-CDK is condensin protein. And remember, this condensin protein play a important role in phosphorylation. Play a important role in condensation of chromosome. That means our task number 1. Okay, and it is a main driver of chromosome condensation in the mitosis. Okay, so ये था हमारा पहला जो पेज है उसका बात। मैंने यहाँ पर आपको जो जो बोला वो एक बार हिंदी में भी बता देता हूँ कि M-CDK को बोला जाता है माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर और मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। ये सिंथेसाइज होता है ड्यूरिंग S एंड G2 फेज, एंड ये टोटल 4 टास्क को इंड्यूस करता है बाई फॉस्फोराइलेटिंग ए डिफरेंट सीरीज ऑफ प्रोटीन: chromosome condensation, breakdown of the nuclear membrane, assembly of the mitotic spindle apparatus, and also the alignment of the condensed chromosome during at the metaphase plate, right? So हम पहले देखेंगे कि कौन कौन सा प्रोटीन है जिसको AMPF और M-CDK फॉस्फोराइलेट करता है। तो पहला प्रोटीन है कॉन्डेंसिन प्रोटीन। दिस कॉन्डेंसिन प्रोटीन का मेन काम है क्रोमोसोमल कॉन्डेंसेशन। ओके, एंड याद रखना कॉन्डेंसिन प्रोटीन इज मेड अप ऑफ SMC एंड NSMC. So SMC means structural maintenance chromosome, okay, and NSMC means non-structural maintenance of chromosome. इन दोनों के बारे में और भी डिटेल में बात करूंगा जब मैं आप लोगों को DNA पैकेजिंग पढ़ाऊंगा। Now the second protein that is phosphorylated by M-CDK is the lamine protein. Okay, so आपको याद होगा कि 2 नंबर जो टास्क था वो क्या था, वो था ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। ओके, एंड इसके लिए लैमिन प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क अंडर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट डिसअसेंबल्स ड्यूरिंग माइटोसिस। ओके, it will stabilize network under the nuclear membrane that disassembles during mitosis. Okay, so now 2 नंबर टास्क भी हो गया। 3 नंबर क्या था? 3 नंबर था द असेंबली ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल apparatus। इसके लिए M-CDK फॉस्फोराइलेट करता है वो सब प्रोटीन को जो प्रोटीन कंट्रोल करता है द बिहेवियर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट? ये 2 प्रोटीन है माइक्रोट्यूब्यूल डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन एंड ऑल्सो माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन। ओके, इन दोनों प्रोटीन को कंट्रोल करके ये कंट्रोल करता है द असेंबली ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल apparatus। ओके, पहले इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। ओके, ऐसे करके बाई परफॉर्मिंग कोऑर्डिनेट फॉस्फोराइलेशन, और आसान भाषा में बोलो ऐसे नंबर ऑफ फॉस्फोराइलेशन परफॉर्म करके ये एक चीज़ को इंश्योर करता है जो कि है द एप्रोप्रिएट सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, राइट? क्योंकि मैंने आपको एकदम पहले वीडियो में क्या बताया था
बताया था कि बिफोर सेल डिविजन सेल हैव टू डुप्लीकेट इट्स जीनोम, और आई शुड से सेल हैव टू डबल हिज जीनोम। ओके, एंड सिर्फ डबल करने से ही काम नहीं बनेगा, अब उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करना होगा, राइट। दैट इज आवर न्यूक्लियर डिवीजन और कैरियोकाइनेसिस, राइट। एंड इस चीज़ को एक्यूरेटली करने के लिए M-CDK का एक इम्पॉर्टेंट रोल्स है। ओके, एंड जो M-CDK अकॉम्प्लिश करता है बाई फॉस्फोराइलेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन दैट वी आर स्टडिंग। ओके, अलॉन्ग विद दैट दो काइनेस अर्ली माइटोटिक जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, वो है पोलोलाइक काइनेस एंड द ऑरोरा काइनेस। पोलोलाइक काइनेस का काम क्या है? पोलोलाइक काइनेस का काम है नॉर्मल असेंबली ऑफ द बाइपोलर माइटोटिक स्पिंडल। एंड ऑरोरा काइनेस जो फर्दर डिवाइडेड है टू टाइप में, ऑरोरा काइनेस ए एंड ऑरोरा काइनेस बी। ये दो भाई क्या करता है? ये दो भाई फैसिलिटेट करता है माइटोटिक स्पिंडल असेंबली एंड ऑल्सो इट परफॉर्म क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन। ओके, सो दैट इज द थिंग। सो इतने तक M-CDK ने क्या क्या किया? M-CDK ने पहले कॉन्डेंसिन को फॉस्फोराइलेट किया एंड इंश्योर किया द कॉन्डेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम, देन लैमिन प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट किया एंड बाय फॉस्फोराइलेटिंग इट इंश्योर्स द ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। देन इसने दो प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट किया, एक था हमारा माइक्रोट्यूब्यूल डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन, अनदर वन इज हमारा माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन। ओके, एंड इससे उसने उसका 3 नंबर टास्क जो था असेंबली ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल apparatus, उसको भी कंप्लीट कर दिया। ओके, एंड उसके साथ हमने दो एक्स्ट्रा एडिशनल काइनेस के बारे में भी जाना। वन इज पोलोलाइक काइनेस, अनदर वन इज ऑरोरा काइनेस। पोलोलाइक काइनेस इज इन्वॉल्व्ड इन द assembly of the bipolar mitotic spindle, and aurora kinase is involved in the assembly of the mitotic spindle as well as the chromosomal segregation. Okay, ऐसे करके सब कुछ हो जाने के बाद हमारा जो M-CDK है वो APCC को भी एक्टिवेट करता है। APCC का फुल फॉर्म है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स और एनाफेज प्रोमोटिंग साइक्लोसोम। ओके, सो इसको भी एक्टिवेट करता है। इसका मतलब M-CDK नॉट ओनली अर्ली माइटोटिक साइकिल को अच्छे से कंप्लीट करवाता है, इसके साथ साथ मेटाफेज को भी अच्छे से कंप्लीट करवाता है। एंड आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द मेटाफेज, मेटाफेज से एनाफेज का जो ट्रांजिशन है उसको भी ढंग से कराता है। ओके, सो नाउ दिस मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन, इसके लिए APCC बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हाउ? दे फैसिलिटेट्स द ubiquitinylation and degradation of two protein. One is obviously M-cyclin, क्योंकि मैंने बोला है कोई एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए पहले वाली स्टेज का साइक्लिन का डिग्रेडेशन इज इम्पॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दैट ये एंजाइम सिक्यूरिन को भी डिग्रेड करता है। नाउ वाई APCC डिग्रेड सिक्यूरिन? क्योंकि सिक्यूरिन और एक एंजाइम को पकड़ के रहता है। दिस एंजाइम इज सेपारेज, एंड दिस सेपारेज एंजाइम इज ए सिस्टीन प्रोटीएज। प्रोटीएज मतलब कोई प्रोटीन को ये डिग्रेड कर सकता है, पर ये फिलहाल इनएक्टिव है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिक्यूरिन। वंस APCC is activated by M-CDK, it will perform the degradation of securin, and as a result separase become activated. Okay, and what separase will do? Separase will going to degrade SCC1, which is a subunit of cohesin. Okay, and this cohesin is involved in the assembly of the sister chromatids. Okay, मतलब this cohesin will going to hold sister chromatids together. Okay, and as SCC1 is degraded by separase, as a result the two sister chromatids separated. Okay,
सो उससे पहले APCC अकेला काम नहीं करता, इट एक्ट्स इन कोऑर्डिनेशन विथ टू होमोलोगस कोएक्टिवेटर्स. दे आर, one is CDC20, another one is homologous of CDC20, that is CDH1. Okay, and CDH1, the full form of CDH1 is CDC20 homologous 1 or CDC20 homolog 1. Okay, now this APCC क्या करता है? APCC will going to destroy C-curin. Okay, and due to the destruction of C-curin, separase will be activated. Okay, and this separase will going to destroy SCC1. Okay, which is a component of condensin, and this condensin is involved in association of sister chromatid. Okay, and as a result sister chromatid separates. That is the thing. If you look into this diagram, M-CDK will activate APCC, and APCC will work with its two homologous coactivators CDC20 or CDH1. Okay, now they facilitates the progression from metaphase to anaphase by ubiquitin annihilation and degradation of M-cyclin and C-curin. This C-curin will going to inhibit the separase, but as C-curin is degraded, so separase become activated, and this separase or this activated separase will going to cleave SCC1. Okay, and this SCC1 is a component of condensin, sorry, not condensin, it is cohesin. This cohesin, because remember, cohesin is involved in association of sister chromatid, and our condensin is involved in condensation of the chromosome. Okay, they are not the same. Okay, so here it is cohesin, and they will facilitate the separation of the sister chromatid. Okay, now एक बात यहाँ पर important है कि as the activation of APCC along with CDC20 and CDH1 facilitate separation of the sister chromatid, that means it will facilitate the transition from metaphase to anaphase. A regulation is necessary, right? क्योंकि अगर यहाँ पर कोई रेगुलेशन नहीं रहा तो APCC का एक्टिवेशन के बाद ही, without ensuring whether the cell is ready for the anaphase stage or not, ये फटाक से anaphase stage में घुस जाएगा. Okay, and this premature entry will not a good news for cell, right? And cell ये बात बखूबी जानता है, इसलिए बोथ APCC जब वो CDC20 के साथ रहता है उसके लिए एक अलग से रेगुलेशन सिस्टम तैयार करके रखा है, एंड दिस रेगुलेशन सिस्टम इज APCC CDC20 can be inactivated by MAT2 or BAB-R1 gene. Okay, so MAT2 और BAB-R1 APCC CDC20 को इनिबिट करके रखता है. अब बात आता है कब तक इनिबिट करके रखेगा. वो ये दोनों को तब तक इनिबिट करके रखेगा जब तक सिस्टर क्रोमाटिड आप प्रॉपरली मेटाफेज प्लेट में अलाइन हो चुके हैं, एंड दे हैव एस्टेब्लिश्ड द बाइवेलेंस स्पिंडल अटैचमेंट. ओके, मतलब एक भाषा में दे हैव सक्सेसफुली completed their metaphase stage. Okay, then only they will release their inhibition effect. Okay, and as a result APCC can do their job and the sister chromatids become separated. Okay, and now as that particular stage is completed, so it is obvious that M-CDK का जो लेवल है वो भी डाउन होगा, and this down level of M-CDK will facilitate the decondensation of the separated chromosome. Okay, or decondensation of the separated sister chromatid. Okay, after that decondensation उस sister chromatid के surrounding nuclear membrane फिर से create होगा. Okay, during the time telophase. Okay, and ultimately the division of cytoplasm.
at the stage what we call cytokinesis. ये हर एक स्टेप को मैं डिटेल में बताऊंगा आपको जब मैं आपको माइटोसिस पढ़ाऊंगा. ओके, सो फिलहाल जो चीज़ इस वीडियो में समझने का हमारा मेन मोटो था वो था M-CDK. ये जो भाई है इसको हम लोग MPF भी बोलते हैं और मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर. ओके, और माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर ये बहुत सारे प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करता है टू कंप्लीट सेवरल टास्क. सो पहला जो प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करता है वो है कॉन्डेंसिन. कॉन्डेंसिन विल गोइंग टू फैसिलिटेट क्रोमोसोमल कंडेंसेशन. देन ये फैसिलिटेट करता है लैमिन को फॉस्फोराइलेट करता है एंड एज ए रिजल्ट इट फैसिलिटेट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन क्योंकि लैमिन विल क्रिएट ए or lamine will stabilize the network under the nuclear membrane that will going to disassemble at the mitosis. Along with that, it will phosphorylate microtubule dependent motor protein and microtubule associated protein. That too will facilitate the association of the microtubule spindle apparatus. Okay, उसके साथ दोनों चीज़ भी हमने देखा, पोलोलाइक काइनेस एंड ऑरोलाइक काइनेस. They will facilitate mitotic spindle assembly. Okay, and after doing all this job, M-CDK also activate APCC. Okay, and APCC will facilitate the transition from metaphase to anaphase. Okay, पर सेल यहाँ पर एक्स्ट्रा रेगुलेशन सिस्टम ऑलरेडी रिक्रूट करके रखा है. दैट इज आवर MAD2 एंड BAB-R1. दे आर द पार्ट ऑफ द स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट मेकानिज्म. सो ये दोनों जीन APCC CDC20 को तब तक रोक के रखेगा जब तक कि ना हमारा जो सिस्टर क्रोमाटिड है उसने प्रॉपरली अलाइन कर चुका है मेटाफेस प्लेट में एंड दे हैव एस्टेब्लिश्ड द अटैचमेंट विद द mitotic spindle. Okay, or they have established the bivalent attachment with the mitotic spindle. Okay, so after doing those things, MAD2 and BAB-R1 will release its inhibition and as a result APCC, CDC20 or CDH1 is now fully activated and they will facilitate progression from metaphase to anaphase. Okay, by facilitating degradation of cyclin, M-cyclin along with securin. Due to the inhibition of this securin, separase become activated and this separase will going to cleave SCC1 which is a component of cohesin. Okay, and this cohesin was involved in association of sister chromatid. That means this cohesin was involved in holding the sister chromatid together and as SCC1 is degraded it result in the separation of the sister chromatid. Okay, so now after completion of all this the level of the M-CDK will down that facilitates the separated sister chromatid to decondense and there will be formation of nuclear membrane around them again and then there will be separation of cytoplasm during the step what we call cytokinesis. Okay, ऐसे करके पूरा का पूरा चीज़ चलेगा. So this is the video for M-CDK. I hope you like it. Thank you.